हेलो स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास देखते हमें एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ रो फर्स्ट एप्लीकेशन देखते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट गोटे चार्ज कंडक्टिंग रॉड आज देखा गोटे इनफाइनाइटली चार्ज प्लेट है फील्ड इंटेंसिटी at a point near field intensity at a point near a infinitely charged plate, infinitely charged plate. Clear? The field intensity at a point near a infinitely charged plate. Suppose we consider this is a charge plate and this is the charge plate. Suppose this is your charge plate. It is a charge plate. It is extends up to infinite. We can extend up to infinite. We can extend on to infinite. It is infinitely charged plate. Suppose this is the charge. The charge is distributed on its surface symmetrically. This is the charge. Clear? Now we are interested to find the point P near the charge plate. A plate रे जेहेतु एठी चार्ज अछि आमे जानि छै if there is a charge there is a field around it. And if there is a field there is a potential, there is a electric field intensity etc. ठीक से भाव में जेतन एटा गोटे चार्ज प्लेट अछि then due to the charge on the plate there is a electric field and in the electric field P is a point. Now we find the electric field intensity at this point. So what is the field intensity at this point? Suppose this is at a distance r. This is at a distance r. From the plate. तले point रे कौन होगा field intensity केता होगा? How can you find out field intensity? Yes, tell me. तले हमें कौन करिवा प्रथमे? हमें इटा कौन कोसे? It is the application of a Gauss law. By using the Gauss law, we find the field intensity. Clear? तले हमें किमिति बाहर करिवा? तो Gauss law रे कौन कहि दिला? Now if there is a charge, we consider a कौन बाहर करिवा? गोटे Gaussian surface which is enclosed the charge. And then we find the electric flux. In order that तो हमको कौन करियो पड़िबो suppose वर्तमान मु कौन कली we consider a cylinder we consider a cylinder of length 2r तले इठी केते r this is the length r and this cylinder pass through this तले plate ए प्लेट दे के हमें कौन करिवा सिलिंडर को पास करिवा तो काहे कि सिलिंडर को प्लेट दे पास कले ना कारण तले एठी जति के सपोज एठी माना करो एडाला द सर्फ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलिंडर हैला तल दिस एरिया बर्तन एठी जति की चार्ज अछि तले चार्ज ता कोन होबा दरकार गोटे सरफेस भीतर एनक्लोज होई रहबा दरकार तेनु ताको एनक्लोज करिवा पाई कोन कले मु कले सिलिंडर को पास कले एवं एठी केते नेबी सेति की आर सिमेट्रिकली ऑन बोथ साइड्स हैला तला में both sides this is the area of cross section so this point ala q this point ala q clear so we consider a Gaussian surface which is a cylinder of length kete gala ethi kete gala r tale r ethi ki r tale kete gala length 2r and tale eta he gala ete length he gala 2r and area of cross section मने करो केते लाठी a suppose area of cross section होला a by s हमें जान नहीं पाइबा हैला तले वर्तन लिखिबा consider an infinitely charge conducting plate infinitely charged plate of surface charge density of surface charge
डेंसिटी of surface charge density कहते हैं सिग्मा क्लियर ताले व्हाट यू मीन सिग्मा दैट इज द क्यू बाय एरिया हैला of surface charge density कहते हैं सिग्मा सिग्मा ला चार्ज पर यूनिट एरिया हैला नी ताले बे हमें कौन करिवा let p be हैला the point p is the point of observation the point p is the point of observation b हैला न लगा p be the point of observation p be the point of observation point of observation means where we find the electric field intensity p be the point of observation at a distance कहते हैं ना r from the plate clear r from the plate हैला तो let p be the point at a distance r from the plate and this is the point of observation means we are interested to find the electric field intensity at this point p एबे हमें केमिति बाहर करिवा now in order to find the field intensity we have to pass a cylinder of area of cross section a and length कहते हैं 2r so that the point p lies on its flat surface काली कहिथिली गोटे सिलिंडर रो केतेटा सरफेस तीनटा सरफेस दुईटा फ्लैट सरफेस एंड गोटेला कर्व सरफेस तले बर्तन देखो तले बर्तन लिखिबा हैला तो कंसीडर ए गॉसियन सरफेस clear which is a cylinder consider a Gaussian surface which is a cylinder hala consider a Gaussian surface which is a cylinder of radius कहते हैं which is a cylinder of radius which is a cylinder of length 2r and area of cross section a and area of cross section कहते हैं हैला ताले consider a Gaussian surface which is a cylinder of length 2r and area of cross section कहते हैं a it is passed symmetrically कहा देगी through the plate है ना it passed symmetrically through the plate है ना so that the point p lies on कुठी if its flat surface point p lies on its flat surface clear हैला तले वर्तमान में कौन कले we consider a Gaussian surface आमे गोटे Gaussian surface नले एवं से Gaussian surface टी किए ना which is a cylinder of length हला 2r and area of cross section हला a हला it passed symmetrically through the plate आमे plate देखि आमे कौन कले आगो symmetrically pass कले symmetrical माने आगो को जति की एपट मध्ये सति हला so that the point p lies on its surface कारण r length हला केते 2r এবং এইটা দি কেতে r তো এটি কোন পাইলে তাহলে p কোড রইলা অন দা ফ্ল্যাট সারফেস ক্লিয়ার এবে আমি বাহার করিবা তাহলে প্রথমে দেখিবা হাউ মাচ ইলেকট্রিক ফ্লাক্স তাহলে প্রথমে দেখিবা व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस सरफेस তাহলে এ সারফেস দেকি কেতে ফ্লক্স লিংক দেলা তাহলে কিন বাহার করিবা না বাই ইউজিং গস ল তাহলে গস ল হলে
आमे प्रथम बाहर करिया पड़िबो हाउ मच चार्ज एनक्लोज्ड विद इन दिस सरफेस। तो एई गॉसियन सरफेस सिलिंडर भितरे केते चार्ज टोटल चार्ज केते अछि। यस हाउ मच चार्ज इज देयर ना जेतेबेले सिलिंडर टा आ भितरे पास करूसी हलानी तले बर्तन कोन देखो तले केते को केते एरिया कहार प्लेट रो केते एरिया बर्तन सिलिंडर भितरे ला ओनली दिस पर्सन। तो जिते एतिक एरिया भितर रोसी तले ए एरिया रे जतिकी चार्ज सेतिकी चार्ज कोड रहला सिलिंडर भितर। तले चार्ज एनक्लोज्ड इन द सिलिंडर चार्ज एनक्लोज्ड इन द सिलिंडर चार्ज एनक्लोज्ड इन द सिलिंडर द चार्ज एनक्लोज्ड इन द सिलिंडर तले केते गला तले Q enclosed is equal to charge per unit area divided into area of this तले area of cross एतिक एरिया जेहेतु सिलिंडर रो एरिया क्रॉस सेक्शन एतिकी तले जेते बेले एटा कोन करसी ना प्लेट देखि जाउची तले प्लेट रो एतिक अंश का भीतर है सिलिंडर भीतर तले एतिक अंश रा चार्ज कते ना आर सरफेस डेंसिटी कते कहले सिग्मा पर यूनिट एरिया रे तले एतिक एरिया रे कते ना दैट इज द चार्ज पर यूनिट एरिया into area of the cylinder कहारो this area of cross section हमें नहीं परिवा कहते a area of cross section है तो this is equal to sigma into a है ला ये तो हमें area of cross section नहीं चाहिए तो this is the charge enclosed in the कोठी cylinder। तबे एक using Gauss law तो what is the electric flux linked with the surface तो electric flux linked with the surface तो electric flux linked with the surface clear electric flux linked with the surface तो surface से तो कहते electric flux linked है ला तो using Gauss law yes तो phi E is equal to कहते थे Q enclosed divided by epsilon this is the Gauss theorem तो this is Q enclosed कहते बार से sigma a तो sigma a divided by epsilon 0 yes this is the charge enclosed within the surface Gaussian surface तो this is the equation 1 तो हमें कहते फ्लक्स पाइले ना phi E is equal to कहते गला ठीक that is equal to sigma a by epsilon 0 this is the electric flux linked with this surface this is the cancer बाहर कले using Gauss law एबे हमें सही फ्लक्स बाहर करिबा कारण हमें मागी छी कोन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तले हमें फ्लक्स बाहर करिबा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तले वर्तन बाहर करिबा केमते हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर करिया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अनदर मेथड हला तले इलेक्ट्रिक फील्ड आंसर किन बाहर करिबा ना इट इज द कोन कहतिला सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एडला दिस इज इक्वल टू surface integration of electric field E dot ds surface integration तले वर्तन बाहर करो तले what is the electric flux linked with this surface तले surface रे केते electric flux रहला हैला तले due to the symmetry of charge distribution तले कोन बेठी तले एटा द charge distribution हला the electric lines of force कोडे this is the direction of the electric lines of force this is the direction of the electric lines of force तो due to the symmetry of charge distribution the electric lines of force are कौन अब away from the plate तो वर्तमान जब इलेक्ट्रिक डायरेक्शन the lines of force direction एया हला this is the direction of the electric field intensity तो कौन अब एठी तो this field is perpendicular to this area this field is perpendicular to this area but parallel to curved area तो वर्तमान में बाहर करिबा तो due to the symmetry of a charge distribution due to symmetry of charge distribution the symmetry of charge distribution the electric field intensity is parallel का सहित that is the axis of the cylinder हला तो electric field intensity by electric lines of force जहाँ लिख पारो electric lines of force हला electric lines of force are parallel to the axis of the cylinder
axis of the cylinder hela to electric flux electric lines of force are parallel to the axis of cylinder, the axis of cylinder. Clear? তাহলে বর্তমানে এটি কোন পাইলে তাহলে যেহেতু the lines of force are parallel to the axis তাহলে this lines of force is perpendicular to the flat surface and parallel to curved surface. তাহলে এবে আমি কোন করিবা the total surface is divided into three parts কারণ যেহেতু এটি তিনটা সারফেস এরিয়া আছে তাহলে ফার্স্ট টাইম বার করিবা তাহলে ইলেকট্রিক ফ্লাক্স linked with this surface তাহলে কত হয়ে গেল তাহলে electric flux linked with the Gaussian surface, with the Gaussian surface, the electric flux linked with the Gaussian surface, the phi E is equal to, that is the surface integration of E dot ds. Clear? The electric field intensity is called, that is the surface integration of E vector dot, this is the closed surface integration. So this can be divided into three parts because this cylinder has three surfaces, two flat surface, curved surface. So it can be divided into three parts, that is S1, suppose this surface is S1, this surface is S2, curved surface, and this is another flat surface, let it be S3. So S1 E dot ds plus S2 E dot ds plus S3 E dot ds. Clear? Hello? This total surface, Gaussian surface, this cylindrical surface. This cylindrical surface has three surfaces. S1 and S2 are the flat surface, and S2 is a curved surface. তাহলে আমি কোন ভাগ করে ইন্ডিভিজুয়ালি তাহলে প্রথমে এটি কেতে ফ্লাক্স এটি কেতে ফ্লাক্স এটি কেতে ফ্লাক্স যেহেতু ফ্লাক্স ইজ এ স্কেলার কোয়ান্টিটি উই add them simple by algebraic rules. তাহলে ফ্লাক্স in S1, then flux in S2, then flux in S3. Clear? Then so now find out তাহলে কত হয়ে গেল তাহলে this is equal to surface integration of S1 কে দিলা E ds. Now here that is the surface, first surface, তাহলে E vector dot ds vector, this is the surface. তাহলে if we consider this is the ds, তাহলে ds area vector is along this, তাহলে both area vector, তাহলে এটি area vector and field vector both are in same direction. Clear? তাহলে if both are E vector and ds vector are in same direction তাহলে এটা কত হলো E dot ds হলো E ds cos 0 plus then second flat surface that is equal to S2 E ds. Then what is the angle? E ds, this is the E vector and this is your flat surface. Now we consider a small elementary area. Suppose this is the small ds. This is your area vector. Area vector is always perpendicular to the area. This is the area vector and this is your electric field. Electric field and area vector the angle kete 90 degree. This is your cos 90. Then plus another surface, that is a flat surface. The third surface S3 E ds. Then cos. If we consider this elementary area on this surface, this is your ds vector and this is your E vector. Both are in same direction. Cos 0. Clear? This is equal to cos 0 1, this is 1, cos 90, that is equal to 0, cos 0 1. তাহলে ইন্টিগ্রেশন কত হলো E ds এটা হলো 1 E ds এটা হলো 0 0 into something 0 তাহলে plus 0 plus this is E ds. Clear? E ds ହେଲା
ताले गोटे हला के EDS दैट इज द फील्ड कोठी द फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस फ्लैट सरफेस and the flux linked with this flat surface ताले जेहेतु this flat surface is symmetrically कोठु from this surface ताले एठु the distance are प्रत्येक point मध्ये distance तो electric field intensity on this surface is constant तो is constant on the surface S1 ताले we can taking out ताले E integration of S1 ds plus similarly the electric field intensity on this surface is constant so E is taking outside so integration of ds s2 so that is equal to E so ds eta la kon so this is the small element area so total if we integrate total surface so this is equal to kete niyatila A this is equal to A the area cross section of the cylinder A plus E into A. Similarly, this is the area of cross section, total area of the, if we integrate total, then this is equal to 2EA, clear? Then the electric flux linked with the total Gaussian surface kadala 2EA. Then this is your equation 2. Hala? Then I first paithile electric flux linked with this Gaussian surface by using Coulomb's law. ताले Coulomb's law अनुसार हमें कहते पाइथिले तो Coulomb's law अनुसार हमें पाइथिले सिग्मा A by epsilon 0 एबे फील्ड अनुसार by definition अनुसार कहते पाइले 2E into A now equate this ताले from equation 1 and 2 from equation 1 and 2 from equation 1 and 2 we get from equation 1 and 2 we get ताले कौन पाइबा देखो ताले 2EA to EA is equal to कहते हैं गला sigma A by epsilon 0 yes you cancel out this तला तेप तल that implies तल E is equal to sigma by 2 epsilon 0 clear तल this is the electric field intensity at a point due to a infinitely charged plate clear तल E is equal to sigma by 2 epsilon 0 clear. What is sigma? The sigma is the surface charge density. आमर एटी कौन थिला दीटा क्वांटिटी थिला गोटे थिला surface charge density sigma आउटे कौन थिला it is at a distance r but there is no r तले एठे हमें कौन जानिले तले electric field intensity due to infinitely charged conductor near it is independent of the position of the point अर्थात the point P एठी रहले जहा एठी रहले से एठी रहले से एठी रहले से एठी रहले से हला because it is independent of a r हलाडी तले हम लिख परिबा तले that implies तो E is proportional to sigma E is proportional to sigma अर्थात it depends only on the surface charge density greater the surface charge density greater is the field intensity clear it is independent it is by field intensity it is independent it is independent कहा से तो it is independent of कह रहा yes the position of the point it is independent of the position of a point it is independent of the position of the point P that is R है तेणु पॉइंट P जोड़ था ना कहीं एठी था कि एठी था नियर द प्लेट जोड़ था ना कहीं कि तुम्हारा फील्ड इंटेंसिटी केते हे गला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 जंते हमें काली देखिथिले केते को देखले तो फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q सॉरी लैम्डा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R कार दिला गोटे लॉन्ग स्ट्रेट वायर रो हलाडी that depends upon कहा फ्रे now that is equal to lambda दिला के linear charge density and position of the point किंतु एठी कोन पाइले it depends upon only the surface charge density but it is independent of the position of the R clear तो electric field intensity near a charge conducting plate charge plate केते गला 2 by sigma by 2 epsilon 0 clear next suppose we consider a thick plate जदि हमें नबा गोटे थिक यूनिफॉर्म प्लेट नबा सपोज वी कंसीडर ए थिक यूनिफॉर्म प्लेट हला
তাহলে দিস ইজ এ কোন থিলা থিন প্লেট উই কনসিডার এ থিন প্লেট তাহলে ইফ উই কনসিডার এ থিক প্লেট thick conducting plate if we consider a thick conducting plate clear then this is the thick conducting plate hala if we consider a thick uniform conducting plate then what about the field intensity same thing ame kemti bahar kariya dekho then jodi eta ote thick plate hala for a thick hala plate thick plate means ହେଲା ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମ ଥିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଯଦି ରହିଲା ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଫିଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି କେମିତି ବାହାର କରିବା ଦେଖ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଥିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ରହିଲା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଲେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା କିଏ ଦିସ୍ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିସ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା ଫ୍ରଣ୍ଟ ସରଫେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସପୋଜ ଇଫ୍ वी କନସିଡର ଦିସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେ ସିଲିଣ୍ଡରଟା ପାସ୍ କରେଇବା ୟେସ୍ थ्रू दिस एठी होल कल जदि पास करेबी ताले एठी कोन करबो इट कवर्स दिस एरिया एवं एठी मध्ये कोन करी एपटे इट आल्सो कवर्स दिस एरिया ताले देयर आर टू सरफेसेस हला ताले इफ इट इज अ थिक प्लेट ताले सेतले कोन हबो द देयर आर टू सरफेस एरिया एनक्लोज्ड विद इन द cylinder जेहेतु देयर आर टू सरफेस एरिया वन इज दिस एंड अनदर इज दिस ताले टू सरफेसेस एरिया कोड रहला ऑन द सरफेस ऑन द कोटी द एनक्लोज्ड इन द सिलिंडर तेणु या भितर जेहेतु दुईटा सरफेस रहिला एवं एथिरे चार्ज एवं एपटे मध्ये चार्ज का भितर रहला एनक्लोज्ड विद इन द सिलिंडर ताले फॉर ए थिक प्लेट द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द सिलिंडर हम लिख परिबा टोटल चार्ज एनक्लोज्ड in the cylinder yes total charge enclosed in the cylinder ताले इज ताले केते गेला q enclosed is equal to केते पाइले ताले a surface रा चार्ज प्लस a surface रा चार्ज ताले a surface रे केते चार्ज रहला ना दैट इज इक्वल टू केते रे बेटा surface charge density into area of cross section ताले सिग्मा into a plus then back side surface रे केते रहला ना सेम थी sigma surface charge density per unit area into area of cross section of the cylinder ताले this is the total charge enclosed in the cylinder मु कहले ताले जदि हमें ए सिलिंडर एटा गोटे थिक प्लेट हुए आमे जदि गोटे कोन करबा एटा को सिलिंडर टा को हमें पास करबा बटे ताले इट आल्सो ए पोर्शन ऑफ दिस आल्सो इनसाइड द सिलिंडर एपटे दिस पोर्शन इज आल्सो इनसाइड द सरफेस ताले दीटा सरफेस कोन रहला सरफेस विथ कोडी सिलिंडर भीतर रहला ताले एठी जति की पोर्शन सिलिंडर भीतर रहला तार चार्ज एपटे जति की सिलिंडर ये जो प्लेट रो जति की पोर्शन रहला सिलिंडर भीतर तार मध्ये चार्ज त टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द सिलिंडर गसियन सरफेस कते गेला ना चार्ज ऑन दिस सरफेस प्लस चार्ज ऑन दिस सरफेस ताले चार्ज ऑन this surface kete na surface charge density that means the charge per unit area into area of the surface seventy charge on this surface that is the surface charge density per unit area kete and total area of a ko kete tal in this way tal we get the total charge kete gala 2 sigma a clear tal this is the total charge hala kete hala 2 sigma a then Gauss law anusare tal flux kete hala tal electric flux the electric flux linked with the surface with the Gaussian surface the electric flux linked with the Gaussian surface के cylinder तल कहते गला ना phi e is equal to q enclosed divided by epsilon 0 तले में कौन पाइले टा yes तले 2 sigma a by epsilon 0 to sigma a by epsilon 0 so this is the total charge enclosed within the Gaussian but total electric flux linked with this surface but we get the total electric flux kete paitila me ka answer hai electric flux answer electric field answer hai but electric field answer hai ame kete paitile hela tale but we know that what is the electric flux तले phi e is equal to देला 2 e into a हला जोटा कि हमें फील्ड आंसर पाइथिले तले flux is equal to 2 e a तले from these two equations we get तले that implies तले केते लिखबा 2 e a is equal to केते गेला 2 sigma a by epsilon 0 तले a cancel out 2 cancel out
तो रहा के E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 है। तो दिस इज फॉर ए थिक प्लेट एंड दिस वन इज द फॉर ए थिन प्लेट। तो थिक प्लेट पाई केते गेला सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 एंड फॉर थिन प्लेट पाई केते गेला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। क्लियर? तो आम कौन पाइले हेलानी फॉर ए थिन प्लेट फॉर थिन प्लेट एस ताले केते पाइले फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 एंड फॉर ए थिक प्लेट कौन पाइले E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। क्लियर? तो दिस इज द कौन पाइले तो फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए इनफाइनाइटली बा कंडक्टिंग प्लेट, इनफाइनाइटली चार्ज्ड प्लेट। क्लियर? नेक्स्ट ताले से जहाँ था थिक था कि थिन था ताले हमें कौन जाले इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या सहित सिग्मा बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द पॉइंट P। क्लियर? ताले में देखिए स्पेशल केस suppose this is a special case कौन मने करो ये गोटे प्लेट चार्ज प्लेट सपोज दिस इज अ चार्ज प्लेट यस दिस इज अ चार्ज प्लेट एंड दिस इज अनदर चार्ज प्लेट। क्लियर? एंड दिस इज अनदर चार्ज प्लेट। ताले ये गोटे चार्ज प्लेट ये गोटे चार्ज प्लेट ताले कौन हम सपोज द सरफेस चार्ज डेंसिटी दिस इज द सिग्मा 1 एंड दिस इज योर सिग्मा 2। यस ताले गोटे है सिग्मा 1 गोटे है सिग्मा 2 है। सपोज वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव ऑपोजिटली। हाँ मन रखिबो एठी हमें कौन पाइले E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 और E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। ताले कौन मिलला E is equal to sigma by 2 epsilon 0 by E is equal to sigma by epsilon 0. This is for thin, this is for thick. This is for thin and this is for thick. ताले sigma तो sigma कौन है पारे ताले charge plate positive है पारे बा negative है पारे। If the charge plate is positive then this sigma is positive, if the charge plate is negative then sigma is negative है। ताले मने करो suppose एटा माने कर सिग्मा एटा माने सिग्मा सपोज दिस वन इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव प्लेट हैला। ताले व्हाट इज द फील्ड इंटेंसिटी एट द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द टू प्लेट्स ताले कोन मा करबा हैला। ताले इफ द टू चार्ज प्लेट्स हैला डी वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस लेट इट बी d हैला d। ताले व्हाट इज द फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। Suppose this is the region 1 and this is the region 2 and this is the region 3 हैला। It is irrespective of the position जोठी नहीं पारो ताले बर्तमान ये region outside एवं this is the outside field intensity केते and inside the field intensity केते। Yes, tell me ताले if we consider region 1 ताले region 1 हैला। तो region 1 रे हम देखिबा ताले बर्तमान देखो सपोज दिस इज ए पॉजिटिव प्लेट ताले दिस इज पॉजिटिव प्लेट मीन्स फील्ड इंटेंसिटी जावे ताले दिस इज योर E फॉर +1 बा E1 हम लिख परिबा दिस इज द फील्ड इंटेंसिटी फॉर दिस फर्स्ट प्लेट एवं दिस इज नेगेटिव यस दिस इज योर E2 हैला। पॉजिटिव थिले अवे नेगेटिव थिले टुवर्ड्स ताले एट दिस रीजन 1 रे ताले कोन पाइले ताले E1 and E2 both are in opposite direction and both the values are same कारण r sigma r मध्ये sigma ताले both the values are same कारण sigma by 2 epsilon 0 but this is the thin plate sigma by 2 epsilon 0 एठी मध्ये sigma by 2 epsilon 0 एठी मध्ये sigma by 2 epsilon 0 ताले एठी कोन हे गेला ताले both the are equal and opposite so in the region 1 the field intensity is 0 हैला। ताले in the region 1 as E1 and E2 and E2 हैला नी are equal and opposite ताले so the resultant field intensity at region 1 is equal to 0 अर्थात there is no field intensity outside this
देन आई फाइंड आउट द रीजन 2 हैला तो सेम रीजन 2 रे कोन हो सेम थिंग इन रीजन 2 कथा देखिबा रीजन 2 दैट इज द इन बिटवीन टू प्लेट्स द रीजन 2 देखो तो व्हाट इज द फील्ड इंटेंसिटी at point this due to this so this is the field intensity so this is your E1 vector and this is same thing E2 vector clear हैला तो this is your E1 vector because this is the positive तो away एवं this is negative towards तो at any point within these two plates तो दीटा प्लेट भितरे आमे जे कोनोसी पॉइंट रे जदी कंसीडर करिवा तो both the fields are in same direction यदि both the fields are in same direction तो resultant field केते गेला ना twice तो लिखिबा आज E1 vector and E2 vector are in same magnitude and same direction already are in same magnitude and same direction हैला same direction so ताले total field intensity at this point second ताले केते गेला sigma by yes 2 epsilon 0 plus हैला sigma by sigma by 2 epsilon 0 divided by sigma by 2 epsilon 0 so that is equal to sigma by epsilon 0 yes so this is your sigma by kete gala epsilon 0 the resultant field intensity in between the two plates is sigma by 2 epsilon 0 and it is directed towards negative plate next so if we consider the third region is similar to first region ताले in this case third region रे हमें कौन लिख परिवा both देखो ताले due to positive plates the field is direction is here and due to negative plate this is here ताले इठे हमें कौन पाइले both E1 and E2 are equal and opposite so the third region is केते गेला 0 so third region is 0 ताले हमें कौन पाइले in third region both the fields are जदि equal and opposite the resultant field केते गेला 0 clear जाय बेला तले बर्तन एबे कोन करिबा तले फर्स्ट टाइम देखिले फर्स्ट रीजन ले 0 सेकंड थर्ड रीजन ले 0 एंड सेकंड रीजन रे केते बेला सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 अर्थात इफ द टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस हैला टू ऑपोजिटली इक्वल एंड ऑपोजिटली चार्ज प्लेट सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस देन द टोटल फील्ड इंटेंसिटी हैला आउटसाइड द plate is 0 and inside the plate is uniform clear next time देखिबा the last the find the electric field intensity at a point due to a point charge हैला electric field intensity at a point due to a point charge due to a point charge clear due to a point charge हैला electric field intensity at a point due to a point charge or हमें लिख परियो or derive Coulomb's law from Gauss law or derive Coulomb's law from Gauss law हैला derive Coulomb's law from Gauss law clear so how can we derive the Coulomb's law from Gauss law by electric field intensity at a point due to a point charge same thing suppose we consider this is a point charge now the let it be this is a point charge positive plus q हैला so if there is a charge there is an electric field around it yes tale magici suppose we are interested to find p is the point of observation in the field at a distance kete nela r hela tale ethi kete nela r tale skemiti bahar kariba in the field of q p is a point at a distance r tale what is the field intensity at point p ebong kemiti bahar kariba na by using Gauss theorem Gauss law tale Gauss law me kemiti jani che ताले हमको प्रथमे चार्ज को एनक्लोज करियो पड़िबो विदिन ए सरफेस एंड दैट सरफेस इज नोन एज द Gaussian surface because here the charge is not enclosed
ताले आम गॉस लॉ पकेवा माने आमको प्रथमे चार्ज को एनक्लोज करिया पड़िबो विदिन ए सरफेस ताले एटी सरफेस क्या हबो ना जेहेतु इट इज अ पॉइंट चार्ज वी कंसीडर ए गॉसियन सरफेस अराउंड दिस व्हिच इज ए स्फीयर हला ताले दिस इज योर गॉसियन सरफेस दिस इज ए स्फीयर क्लियर ताले दिस इज द गॉसियन सरफेस So now find out the electric flux linked with this Gaussian surface by using the Gauss law. तो बर्तन देखो consider a point charge. Consider a point charge Q. Consider a point charge Q. That creates a field around it. That produces electric field around it tale within the field P is the point of observation tale P let P be the point of observation P be the point of observation let P be the point of observation which is at a distance r from the charge which is at a distance r from the charge clear which is at a distance r from the charge তাহলে এটা হলো পয়েন্ট চার্জ এবং এটা হলো p at a distance r তো আমি কোন বাহার করিয়া যাচ্ছে at point p what is the field intensity এবং কেমিতি বাহার করিবা না applying Gauss law তাহলে কোন করিয়া পড়িব প্রথমে কোন কইছি যেতে আমি Gauss law apply করিবা first we enclose the charge তাহলে বর্তমানে চার্জটাকে আমি enclose করিবা হলানি তাহলে কোন করিয়া enclose now we construct a surface around this and this surface is known as Gaussian surface. Construct a Gaussian surface around it. Construct a Gaussian surface around it which is a sphere of radius कहते r जेहेतु p is the point at a distance r ताले we consider a Gaussian surface around it which is a sphere of radius कहते r clear now ताले एबे हमें कोन देखिबा ताले what is the total charge enclosed within the surface yes q ताले q हला के total charge ताले total charge enclosed in the surface हला total charge enclosed in the surface केते गला ताले q enclose is equal to केते गला ताले केते रहला only q ताले q is enclosed is only q that is only one charge is there point charge q so charge enclosed within the surface is q ताले using Gauss law the flux linked with this surface the flux linked with this surface তাহলে কেতে গেলা তাহলে phi e is equal to কেতে কই দিলা q enclose by epsilon 0 তাহলে q enclose কেতে বললা না q by epsilon 0 তাহলে this is the equation 1 clear তাহলে flux enclosed within the surface তাহলে কেতে বললা q by epsilon 0 হলা now you find out the electric flux in another method by using the electric field আমি বাহার করিয়া যাচ্ছে electric field তাহলে electric field অনুসারে প্রথমে বাহার দেখিবা কেতে এটি field এটি flux কেতে suppose E is the field intensity at point P because এবং this field is constant তাহলে এটি যা এটি সে due to the symmetry হলানি কারণ এটি field intensity কেতে আমি তাহলে এটি যেতি হবা কারণ charge distance at each and every point on the surface is constant তাহলে due to the symmetry
the field intensity field intensity कोठी at P है due to symmetry the field intensity at P on the surface the field intensity on the surface field intensity on the surface is constant and radially outward and radially कौन हम outward because this is the charge the electric field कौन this is the direction of the field intensity है तो this is your radially outward है तो due to the symmetry the field intensity on the surface is constant at प्रत्येक point रे field intensity constant रहेबो and it is radially outward clear तो लेबे में बाहर करिवा तो if we consider a small elementary area at this point suppose this area ला केते ds area vector केते ला ना ds vector प्रत्येक पॉइंट रे देखिवा तो what is the electric flux linked with this surface area तो electric flux तो हम field answer जदी बाहर करिवा तो electric flux linked with the surface Gaussian surface तले इस कते गला ना E electric flux तले phi E is equal to surface integration of कते गला E dot ds there is only one surface हमें सेठी कौन करथिला different surface दिला कोडी flat surface दिला कोडी curved surface दिला जेतेला surface दिला हमें सेतेला surface रे बाहर करथिले एठी कोन अछि only one surface is there that is the spherical surface तेणु E dot ds तल केता बेटा तल that is equal to surface integration of E ds देखो what is the this is the field intensity and this is the ds vector तल both are कोन रहला 0 कारण same direction हमें जोठी नियना का each and every point है जेहेतु इज रेडियली आउटवर्ड एंड प्रत्येक पॉइंट रे सरफेस एरिया इज आउटवर्ड तो ये कौन रहला cos 0 तो दिस इज योर cos 0 तो दैट इज इक्वल टू cos 0 के देगला 1 तो दिस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E ds क्लियर तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू के देगला सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E ds तो E is constant guys each and every point on the surface E is constant so E is taking outside so E integration of ds of s so that is equal to E into s what is the s that is the surface area of the sphere that is equal to E into 4 pi r square that is the equation 2 surface area of the sphere so हमें electric flux वाले through this area through this surface is this on the concept of the electric field and on the concept of the charge Gaussian law answer केते पाइथिला हमें q by epsilon 0 तले from equation 1 and 2 we get तले from equation 1 and 2 from equation 1 and 2 हला we get from equation 1 and 2 we get तले केतला E into 4 pi r square is equal to what we get yes तले q by epsilon 0 तला ते E is equal to केते गला तले that is equal to एटा पुण्य q by 4 pi r square into epsilon 0 we can rewrite them tale 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square yes this is the electric field intensity at a point जोटा कि हमें आगु बाहर कर सर से तले E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square तले this is the field intensity at a point due to a point charge तो इठा में देखिवा Coulomb's law तले what is the Coulomb's law the Coulomb's law thila if the two charges q1 and q2 are separated by some distance there is a electrostatic force 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square हला तो now we derive this Coulomb's law from the Gauss law तले ए पॉइंट रे हम कोन पाइले तले this is the field intensity at this point p केते गेला E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square now we put here another charge let it be q dash tale put a charge put another point charge q dash at p hela where the field intensity kete barchi E where
where E with the field intensity clear ताले आमे पॉइंट पी रे कोन रखिली आउ गोटे चार्ज नै थोइली ताले जोठी फील्ड इंटेंसिटी केते अछि E ताले इफ ए चार्ज present in a field ताले what is the force ताले force on the charge q dash force on the charge q dash is equal to field into charge हला ताले गोटे फील्ड रे जदी आमे चार्ज रखिबा ताले तापर केते फोर्स पडिला ना q into चार्ज लाटी केते q dash ताले व्हाट इज e ताले दिस कैन बी रिटन एज ताले e केते पाइछे हमें 1/4 पाई at the point p field केते बाहरसी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q by r square into q dash clear ताले that is equal to ताले 1/4 pi epsilon 0 q dash by r square ताले this is the mathematical form of Coulomb's law एटी चार्ज केते अछि q1 q2 separated by distance r एटी चार्ज के q dash separated by distance r हला ताले this is Coulomb's law ताले hence Coulomb's law is derived from Gauss law तेणु hence Coulomb's law is derived from Gauss law clear hence Coulomb's law is derived from Gauss law okay already then we start new chapter that is the capacitance